अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लेफ़्ट ओवर यार्न से कुछ अच्छा सा बनाने जा रहे हैं, तो चलिए सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा यार्न बचा हुआ था, तो हमने उससे ये छोटे छोटे फूल बनाए हैं। फूल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने यूँ सर्कल बनाना है, मैजिक रिंग बनाई, 3 चेन बनाई और उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया। 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन को इंक्लूड करते हैं। 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया ही कंसीडर होंगे। तो ये हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अगेन देखें, yarn over, pass through the magic ring, yarn over, pull through the magic ring. Now I have 3 loops, yarn over, pull through 2 loop, yarn over, pull through 2 loop. This is called double crochet, and we need 12 double crochet. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and now 12. Make a slip stitch here, yarn khatam. Okay, I found another piece. This is how leftover yarn is used again and again. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, now 12. This is slip stitch, and now chain 1, cut the yarn. This extra yarn, cut it out. तो वैसे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो भी आपका यार्न बच जाए उसको फेंका ना करें, उससे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बनाया करें, वो फिर आपके ग्रैंड स्क्वायर बनाने के लिए इस्तेमाल में आ जाते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।